हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो आप सब? आज हम डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं भी ये सीख रहा हूँ। मैं भी इसके मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, आज सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस बारे में। डायबिटीज़ इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय chronic hyperglycemia and associated with the disturbance of carbohydrates. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स समझो जो मेटाबॉलिक को हार्म करते, जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और डायबिटीज़ मेलिटस, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। लीवर सिरोसिस, ये सब कुछ। तो इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का, and protein metabolism due to absolute or relative deficiency in insulin secretion. Diabetes causes long-term damage, dysfunction and failure of various organs. फास्टिंग प्लाज्मा डायग्नोसिस कैसे करने का इसका, डायबिटीज का? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, अगर फास्टिंग में जब जो टेस्ट रहती है रैंडम ब्लड शुगर्स, फास्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल, जो 3 टेस्ट रहते हैं ब्लड की ग्लूकोज चेक करने हैं। तो फास्टिंग मतलब खाने से पहले आप जो चेक करते हैं प्लाज्मा की ग्लूकोज, वो कम से कम मोर देन, अगर 126 mg पर डेसीलीटर, मतलब के 126 mg के ऊपर अगर आपकी शुगर रहती है फास्टिंग में, मतलब जो खाने से पहले सुबह लेते हैं, तो 126 mg के ऊपर रहती है तो वो डायग्नोसिस का एक सिम्टम्स है। समझो आपकी 200 है, 250 है फास्टिंग में, तो ये डायग्नोसिस है डायबिटीज का। सिम्टम्स ऑफ डीएम, सिम्टम्स में बहुत सारे मैं आगे आपको डिस्कस कराऊंगा। एंड रैंडम BSL मतलब ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसमें अभी एक ओरल ग्लूकोज देने के बाद अगर 75 ग्राम ग्लूकोज लोड होता है, मतलब 72 आवर के बाद 200 mg डेसीलीटर आता है, तो सॉरी, तो इससे भी डायग्नोसिस पता चलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज, क्लासिफिकेशन में क्या है, डायबिटीज के टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, वो आपको बताऊंगा, टाइप 4 भी बताऊंगा। टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी ड्यू टू आइलेट सेल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, आइलेट सेल्स ऑफ पैनक्रियाज के जो आइलेट सेल रहते हैं, इधर ह्यूमन मेडिटेड और आइडियोपैथिक मतलब अननोन। टाइप 2 relative insulin deficiency due to impaired beta cells functions, marked peripheral insulin resistance. Type 3 types, absolute insulin deficiency due to islets of pancreas destruction, either immune mediated or idiopathic. Type 2 relative insulin deficiency due to impaired of beta cells function, marked peripheral insulin resistance. Type 3 other specific. Type 4 gestational diabetes means प्रेग्नेंट लेडी में जो गेस्टेशन पीरियड रहता है वो, उसमें भी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती है। अदर टाइप्स जो आपको मैंने बताया था, थर्ड टाइप, वो आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। अदर स्पेसिफिक टाइप्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ बीटा सेल्स फंक्शंस, genetic defects in insulin action, disease of exocrine pancreas secondary to endocrinopathy,
Drugs, chemical induced infections, uncommon form of immune mediated diabetes or the genetic syndrome associated with the diabetes. ग्राफ रहता है नॉर्मल डायबिटिक 2, नॉर्मल सब्जेक्ट्स डायबिटिक 1, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पेरिफेरल टिश्यू, लीवर इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज डिक्रीज, ग्लूकोज अपटेक, एडिपोज टिश्यू, एडिकेट इंसुलिन डिक्शन ऑफ बीटा सेल्स. इंसुलिन क्या रहता है? व्हाट इज इंसुलिन? डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, द मिराकल इंसुलिन का ऐसा था. पेशन लियोनार्ड थॉमसन 15 दिसंबर 1922. उसके एक साल के बाद 15 फरवरी 1923 के बाद उसको इंसुलिन देने के बाद टाइप 1 में होता है स्ट्रक्चर. ठीक है, आपको अब मैं दूसरा चैप्टर बताता हूँ इसका. ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एंड इंसुलिनम, इनके बारे में पढ़ते हैं. क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज के बारे में पढ़ते हैं. अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरग्लाइसेमिया, फास्टिंग प्लाज्मा. आपको बताया था मैं 126 कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी, इंसुलिन रेजिस्टेंस. जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, concordance in identical twins, susceptibility, genetic HLA region and chromosome 6, environmental factors, viral infection, experimental induction with the chemicals, autoimmune factors. पैथोजेनेसिस. जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है? कॉनर्डेंस इन आइडेंटिकल ट्विन, बोथ पेरेंट्स डायबिटिक, 50% रिस्क टू चाइल्ड. अगर आपके माता पिता को अगर डीएम है तो आपको भी 50% रिस्क रहता है डीएमओ का. कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ओबेसिटी में जैसे कि आप खुद मोटे हो, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आपके भी चांसेस रहते हैं डीएम होने के. अगर आपको हाइपरटेंशन है जिसे ज़्यादातर बीपी बोलकर ब्लड प्रेशर के नाम से पहचानते हैं तो उससे भी आपके चांसेस होते हैं डीएम होने के. लो फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि आप सोते रहते हो और समझो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका समझो सीडेंटरी लाइफ है तो आपको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं. डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, लाइपोटॉक्सिसिटी, ग्लूकोज टॉक्सिसिटी ऑफ आइलेट्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, रिसेप्टर्स एंड पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट्स, impaired glucose utilization, increased hepatic glucose synthesis, hyperglycemia. फीचर्स, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. टाइप 1 आपको मैंने जैसे डिस्कस बताया था. टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है. टाइप 1 फ्रिक्वेंसी आप ये 10 से 20% होता है नॉर्मल लोगों में, और टाइप 2 80 से 90% होता है. एज क्या है? एज अर्ली एज समझो बिलो 35 के अगर किसी को होता है तो टाइप 1 रहता है. जैसा
जुवेनाइल डायबिटीज जो इनबॉर्न रहता है और ये लेट रहता है, 8 से 40 के बाद टाइप 2 होता है। टाइप ऑफ ऑनसेट एब्रप्ट एंड सीवियर, इसमें क्या रहता है, सीवियर रहता है और सडन रहता है। इसमें ग्रेजुअल एंड इंडिशियस, इसमें वेट नॉर्मल रहता है, इसमें ओबेस पर्सन रहता है ज़्यादातर। फैमिली हिस्ट्री से कम आता है, ये फैमिली से ज़्यादा 20% आता है टाइप 1 और टाइप 2 60% आता है। पैथोजेनेसिस autoimmune destruction of beta pancreatic cells, insulin resistance, islet cell of antibodies present, decrease insulin normal और increase insulin टाइप 2 में। क्लिनिकल मैनेजमेंट इंसुलिन एंड डाइट टाइप 1 में, इसमें नॉर्मल एंड इंक्रीज इंसुलिन। क्लिनिकल मैनेजमेंट डाइट, एक्सरसाइज, ओरल ड्रग्स एंड इंसुलिन। इसमें मैक्सिमम एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कीटो एसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलार कोमा। इंसुलिन डिफिशिएंसी कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया लीडिंग टू ग्लाइसूरिया, इंक्रीज कैटाबोलिज्म, इंक्रीज द लाइपोलाइसिस एडिपोज टिश्यूज का, इंक्रीज फैटी एसिड इन प्लाज्मा, ऑक्सीडेशन इन लिवर, decrease in anabolism, osmotic diuresis, dehydration and loss of electrolyte. वास्कुलर चेंजेस में क्या होता है, माइक्रोवास्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस, इन्फार्क्ट्स, गैंग्रीन इन एक्सट्रीमिटीज, माइक्रोवास्कुलर न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, मेटाबॉलिक चेंजेस सॉर्बिटोल रीजन्स, अओर्टा, आई लेंसेस में और किडनी में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी। इम्यून में इन्फेक्शन लाइक टीबी, यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, डिफेक्टिव पीएमएन फंक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Oral hypoglycemics, the agents that are given orally to reduce the blood glucose level in diabetic patient. 5 types of oral antibiotic drugs are currently in use. Biguanides, metformin जो commonly यूज होती है, commonly metformin यूज होती है जिसमें आपको हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन नहीं आती है, जैसे सडन आपकी BSL कम नहीं होती है। सेकंड इज सल्फोनाइलुरेस, जैसे ग्लिमिप्राइड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन 500 देंगे तो ग्लिमिप्राइड 1 mg देंगे आपको। ग्लाइब्यूराइड, टल्बुमाइड, ग्लिपिजाइड, मेग्लेनाइड्स, नेटाग्लाइड, रेपाग्लेनाइड, ये सब एजेंट्स है 5 टाइप्स के। अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स, एकार्बोज। The oral antibiotic drugs are value only in treatment of patient with type 2। जो oral hypoglycemic drugs है ना, जो वो सिर्फ टाइप 2 में दे सकते हैं, टाइप 1 में इंसुलिन ही देना पड़ता है। Diabetes mellitus whose condition cannot be controlled by diet alone. These drugs may also be used with the insulin management of some patients with diabetes mellitus. Use of an oral antibiotic drugs with insulin may decrease the insulin dosage in some individuals. जैसे कि ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है ना, जो इंसुलिन की कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जिससे सब इंडिविजुअल्स को इंसुलिन भी डिक्रीज मात्रा में लेना पड़ेगा।
बाइगोनाइट्स पढ़ेंगे, मेटफॉर्मिन इज ओनली ड्रग ऑफ दिस क्लास प्रेजेंटली अवेलेबल इन मार्केट। बाइगोनाइट्स में जो है ना सिर्फ मेटफॉर्मिन है ना वही अवेलेबल है। इट डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसेमिया, मैंने जैसा बताया आपको हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता है। आपको हाइपोग्लाइसेमिया की वैल्यू बताता हूँ मैं, जैसे 60 mg हाइपोग्लाइसेमिया वैल्यूज below the 70 mg per dl is known as हाइपोग्लाइसेमिया। जैसे कि आपकी नॉर्मल 80 से 120 140 के बीच में शुगर रहनी चाहिए एक नॉर्मल एडल्ट की। दे इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक, क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन इन स्केलेटल मसल, thereby reducing insulin resistance and reduce the hepatic glucose production gluconeogenesis। मतलब ये क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं अपटेक और यूटिलाइज करते हैं स्केलेटल मसल में अपने, एंड रिड्यूस द ग्लूकोज प्रोडक्शन भी डिक्रीज करते हैं हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। Pharmacokinetic aspects, metformin has half-life about 3 hours and excreted unchanged in the urine। ये मैक्सिमम 3 आवर्स तक काम करता है, तो इसे खाने से पहले 2 घंटे पहले भी आप ले सकते हैं, बिफोर मील। अनवांटेड इफेक्ट्स, डोज रिलेटेड gastrointestinal disturbance, lactic acidosis are rare but potentially fatal toxic effect. Long-term use may interfere with absorption of vitamin B12। इसके इफेक्ट क्या है नाम पे, डोज रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, ये क्या है जीआईटी में डिस्टर्बेंस करता है, जैसे कि आप डाइजेशन को प्रॉब्लम लाता है। लैक्टिक एसिडोसिस रेयर बट पोटेंशियल फेटल टॉक्सिक, लैक्टिक एसिडोसिस भी करता है। लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे तो आप विद ऑब्जर्वेशन ऑफ B12 भी, जो आपके लिए इसेंशियल होता है B12 लेना। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, जो मेटफॉर्मिन है ना वो एक्यूट किडनी इंजुरी में, क्रोनिक किडनी इंजुरी में, जिसको किडनी रिलेटेड रीनल फेलियर है जिसका, उसमें नहीं देना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हेपेटिक डिसीज में नहीं देना चाहिए, हाइपोक्सिक पल्मोनरी डिसीज में, हार्ट फेलियर और शॉक में नहीं देना चाहिए। सल्फोनेराइज फर्स्ट जनरेशन में क्या है, टॉलब्यूटामाइड, क्लोरोप्रोमापानाइड और ये मैक्सिमम ग्लिमिप्राइड यूज होता है इंडियन मार्केट में। एक्ट्स ऑन बीटा सेल स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रेशन एंड thus रिड्यूसिंग द प्लाज्मा ग्लूकोज। क्या करता है वो, बीटा से जो इंसुलिन रहता है जो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है उसको स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन के लिए, और रिड्यूसिंग द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। ग्लिमिप्राइड के बारे में पढ़ेंगे। Half-life, peak energy, peak plasma levels in 1 hour, most metabolized in liver inactive products which are excreted in urine, causes hypoglycemia,
has diuretic action. Most sulfonylureas cross the placenta and into the pregnant. इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे. A polypeptide hormone with two peptide chains that connected by disulfide bonds, synthesized as precursors to insulin, that undergoes prolytic cleavage to form insulin and C-peptide, both of which are secreted by beta cells of pancreas, triggered by high blood glucose. Insulin and glucagon regulate blood glucose level actions, control intermediary metabolism, having action on liver, muscle and fat. Conserves fuel by facilitating the uptake and storage of glucose, amino acids, fats after a meal. Sources of insulin. Human insulin is produced by recombinant DNA technology using special strains of Escherichia coli or yeast that have been genetically altered the content of gene of human insulin. Acts on insulin receptor or liver cells, fat cells. Mode of action में क्या है, कैसा है का mode of action. Acts on insulin receptors on liver cells, fat cells, and stimulate glucose transport across the membrane by ATP dependent transporter like GLA2. Insulin administration. Because insulin polypeptide is degraded in the gastrointestinal taken orally. अगर इंसुलिन को लेंगे तो क्या है, डिग्रेडेड हो जाएगा orally. Therefore generally administered by subcutaneous. Rapid acting short acting insulin preparation. Regulator insulin, insulin lispora, insulin aspart and insulin glycerin. This insulin preparation reached peak plasma concentration 39. Insulin lispora. Intermediate acting insulin, neutral protamine and phase insulin or suspension crystalline zinc insulin combined at neutral pH with a positively charged polypeptide protamine. Delayed absorption of insulin because of its conjugation with the protamine, forming a less soluble complex. Long-acting insulin preparation. Insulin glycerin insulin determined. The length of time onset is 3 to 4 hours and the maximum duration is 20 to 24 hours. Regular human insulin. A short-acting preparation for treat via type 1 and type 2 diabetes for hyperglycemia, abnormal high blood sugar experience and during pregnancy. Administered subcutaneously as with the other insulin. The only preparation that also may be administered intramuscular and intravenously. This insulin acts within 15 to 30 minutes and lasts from 12 hours. Pharmacokinetics of insulin destroyed in gastrointestinal tract and must be given parenterally, usually subcutaneous but intravenously or occasionally intramuscular in emergencies. Insulin should be administered 15 to 20 minutes prior to meal.
Adverse reaction to insulin. Hypoglycemia, most serious and common. Hypoglycemia. Others, weight gain, lipodystrophy, less common with human insulin. Allergic reaction and local reaction at the site of infection. न्यू इंसुलिन प्रिपरेशन आप देख सकते हो. Insulin syringes, pre-filled and disposable syringes with regular and modified insulins. Pen devices, fountain pen-like insulin cartridges, inhaled insulin fine powder delivered through nebulizer, rapid absorption. Insulin pumps, portable infusion and connected by suction-in-place cannula containing insulin infusion. Insulin patch pen, small 2 inches, plastic devices like designed to be worn the skin. Implanted pumps, electromechanical mechanism regulates insulin delivery from percutaneously refillable reservoir. Mechanical pumps, fluorocarbon. Osmotic pumps are also being developed. Other routes, oral, liposome, impermeable polycoating, rectal, nasal, intraperitoneal. Alternate medicine. Medicinal plants have been studied for treatment of diabetes. However, there is insufficient evidence to determine their effectiveness. Cinnamon, bromine, selenium, and thiamine. Thank you. इंसुलिन के बारे में पढ़ना है. Bioassay of insulin. One international reduces the PSL to 45 mg per dl in fasting. 1 unit क्या करता है 45 mg maximum in fasting rabbits. 1 mg insulin 28 unit. Can also be measured by radioimmunism and or enzyme immunoassay. Regulation of insulin secretion, direct stimulation, plasma glucose or amino acids, ketones, hormonal regulation, gastrointestinal hormones, GIP, and directly stimulate beta cells. Neural regulation, parasympathetic stimulates insulin and release the through IP3 and DAG. Actions of insulin: metabolic, carbohydrate, lipid, protein, electrolyte, muscular, anti-inflammatory, fibrinolytic, growth, steroidogenesis, carbohydrate metabolism. Oral action of insulin is decrease the glucose level in blood, transport the glucose inside the cell. Peripheral utilization, glucose, glycosynthesis, glycogenolysis, neogenesis, lipolysis, lipogenesis, glycerogenesis, ketogenesis, protein metabolism, protein synthesis and increase the entry of amino acid in the cells,
electrolyte metabolism. पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. इंसुलिशंसी क्या करता है? इंसुलिन डिफिशियंसी एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड काउंटर हार्मोन. एक 1 मिनट है. Pathogenesis of DKA, insulin deficiency, absolute and relative, anabolism, peripheral utilization, glucose, catabolism, dehydration. How ketosis occurs? Treatment of DKA, fluid therapy. Treatment of DKA. Treatment of DKA, fluid therapy, rapid acting regular insulin, potassium bicarbonate, phosphate, antibiotics. Antibiotics. Treatment of precipitating cause of general measures. Fluid therapy, adequate tissue perfusion is necessary. Insulin action. Normal saline is fluid of choice for initial rehydration. 1 liter in first 2, next 1 liter next 22 hours, 2 liters in next 4 hours. फ्लूइड थेरेपी जैसा करेंगे. Adequate tissue perfusion necessary insulin action. Normal saline is fluid choice for initial rehydration. 1 liter in first, next 1 liter in next 2 hours, 2 liters in next 4 hours, 2 liters next. When BSL reaches 300 mg, person fluid should be changed to 5% dextrose with concurrent insulin. Regular short-acting insulin IV treatment for choice. Loading dose is 0.1 0.2 unit per kg IV bolus. Then ठीक है. अब एक पर्सन का वेट है. Sorry. Calculator. 0.1 70 है. 0.1 unit per 70 kg is equal to 7 unit bolus. 0.2
IV bullets देने 10 kg per hour IV by continuous infusion. Rate double if no signal following BSL 2 hours. 2 to 3 hours after BSL reaches 300, if patient becomes fully conscious and encouraged to take oral food and subcutaneous insulin is started. Potassium replacement in initial stage. Treatment of potassium is not administered because in decay it remains normal or increased. In presence of insulin infusion, serum potassium decrease, hence 10 microgram per liter potassium can be added with the third bottle of normal saline. Serum potassium plus bicarbonates and phosphates. Bicarbonate with blood pH more than 7.1, no need of sodium bicarbonate. In presence of severe acidosis, 50 ml sodium bicarbonate added to IV fluid. Phosphates, non-availability of ideal preparation, replacement not very essential unless potassium phosphate, hypermolecular non-ketotic coma, usually occur in type 2, dehydration with severe hyperglycemia without ketoacidosis because of insulin yielding hormone sensitive and lipase. हाइपरटेंशन पढ़ते हैं अपने Hypertension is the term doctors use for high blood pressure. Blood pressure readings are measured in millimeters of mercury, mm of Hg, and usually given as number 2. For example, 140/90, written as 140/90. The top number is your systolic pressure. Pressure created when your heart beats is considered high if consistently over 140. Then bottom number is your diastolic pressure, the pressure inside blood vessel when heart is raised. It consider high if consistently over 90. ठीक है 80 भी रहता. Either or both these number may too high. Pre-hypertension is when your systolic blood pressure is between 120 and 139 on your diastolic pressure.
pressure between 80 and 89 on multiple readings. If you have pre-hypertension, you are more likely to develop high blood pressure at some point. See also blood pressure. Symptoms क्या है? Most of time there are no symptoms. Symptoms that may occur include confusion, chest pain, ear, nose or buzzing, irregular heartbeat, nosebleed, tiredness, vision changes. If you have severe headache or any of symptoms above, see your doctor right away. This may be signs of complication dangerously high blood pressure called malignant hypertension. Treatment. The goal of treatment is reduce the blood pressure so that you have lower risk of complications. There are many different medicines that can be used to treat high blood pressure. Such medicine include alpha blocker, angiotensin converting enzyme S inhibitors, angiotensin receptors blockers, beta blocker, calcium channel blockers, central alpha agnos, agnos, agnosist, agno, agnosist diuretics, renin inhibitors including allicin vasodilators. Medicine used if blood pressure is very high may include clonidine, diazoxide, furosemide, hydralazine, minoxidil, nitroprusside. Your doctor may also tell you to exercise, lose weight, and follow healthier diet. If you have pre-hypertension, blood pressure measurement are the results of force of blood produced by heart and size of condition of arteries. Many factors can affect the blood pressure, include how much water and salt you have in your body, the condition of your kidneys, nervous systems, or blood vessels, and the levels of different body hormones. High blood pressures can affect all types of blood people. If you have a high risk of high blood pressure, if you have family history of disease, high blood pressure is more common in Africans, Americans, and Caucasians. Caucasians. Most of time, no cause is identified. This is called essential hypertension, high blood pressure that result from a specific condition, habit, or medication is called secondary hypertension. Too much salt in your diet can lead to the higher blood pressure. Secondary hypertension may also be due to adrenal gland tumor, alcohol poisoning, anxiety and stress, appetite suppression, atrophic sclerosis, birth control pills, certain cold medicines, cocaine use, Cushing syndromes, diabetes, kidney disease include glomerulonephritis, kidney failure, renal artery stenosis, renal vascular obstruction or narrowing. Migraine medicine, hemolytic uremic syndrome, HANU, spleen purpura, obesity, pain, pregnancy called gestational hypertension, radiation enteritis, renal stenosis, retroperitoneal fibrosis, Williams tumor. Test and diagnosis. Your healthcare provider will perform a physical exam and check your blood pressure. If the measurement is high, the doctor may think you have high blood pressure. The measurement need to be repeated over time so that the diagnosis can be confirmed. If monitor your blood pressure at home, you may be asked the following questions. What was your most recent blood pressure reading? What was previous blood pressure reading? What the average systolic
diastolic, and your blood pressure increase recently. These tests may be include CAM20, echocardiogram, urine, urine analysis, X-ray of kidneys. Prognosis: most of time high blood pressure can be controlled with the medicine and lifestyle changes. Prevention: lifestyle changes may help you control the blood pressure. Lose weight if you are overweight. Excess weight add to strain on heart in some cases. Weight loss may be only treatment needed. Exercise regularly, eat healthy diet, eat less fat and sodium salt, MSG, baking soda, all the contain sodium, eat more fruits, vegetables, fibers, avoid smoking if you have diabetes, keep your blood sugar under control. Complication: aortic dissection, blood vessel damage, brain damage, congestive heart failure, kidney damage, kidney failure, heart attack, hypertensive heart diseases, stroke, vision loss. And contact a doctor if you have blood pressure. If you are regularly scheduled appointments with your doctor, if even if you have not been diagnosed with the high blood pressure, it is important to have your blood pressure checked during your yearly checkup, especially if someone in your family has had high blood pressure. Call your health provider right away if home monitoring shows that your pressure high remains high or you have any following symptoms: chest pain, confusions, excessive tiredness, nausea, vomiting, severe headache, shortness of breath, significant sweating, vision changes. Hyper Hypertension, the silent killer. Hypertension, also known as high blood pressure, is defined as systolic blood pressure of 140 mm of Hg or diastolic pressure of 90 mm of Hg or higher. Hypertension, systolic blood pressure, diastolic blood pressure above 140 is known as systolic. हाई ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के अबव रहा है और डायस्टोलिक 90 के. Types of hypertension: essential, secondary. Essential: a disorder unknown origin affecting the blood pressure regulating mechanism. Secondary to other disease process, environmental factors, stress, sodium intake, increase, obesity, smoking.
related to normal blood pressure. Blood pressure cardiac output is registering the passage of blood through your precapillary arterioles (PVR). Physiological CO and PVR maintain cardiac output and PVR. Cardiac output and capillary arterioles is maintained and minute to be minute by arterioles. Kidney is the fourth site volume of intravascular fluid. Baroreflex, humoral mechanism and renin-angiotensin. Local agents like nitric oxide and hypertensive baroreflex renal blood volume control systems set at higher level. All antihypertensive act via interfering normal mechanism. Baroreceptor reflex are long-term blood pressure control by controlling blood volume, reduction in renal pressure, intrarenal distribution of pressure and increase the absorption of salt and water, decrease the pressure in renal arterioles and sympathetic activity, renin production and angiotensin production, causes direct constriction of renal arterioles, stimulation and adrenaline synthesis, sodium absorption and increase the intravascular blood volume. Classification of drugs: ACE inhibitors, captopril, angiotensin, diuretics, thiazide, calcium channel blocker, nifedipine, phenobarbital, amlodipine. ACE inhibitor. What is the renin? Renin angiotensin physiological pressure. Mechanism of actions. This group of drugs inhibit the enzyme kinase or ACE, or these drugs decrease the activity of RAS, is also put into direction of learning. Adverse effect: cough, persistent brassy cough in 20% of cases, inhibition of bradykinin, substance known in drugs, hyperkalemia in renal failure, patient with the potassium plus spring diuretics, NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and beta blockers. Check the potassium layer, hypertension, hypomalic state, sharp occur, acute renal failure, pregnancy, drugs.
Hypertension is very common disorder, particularly past middle age. It's not an it's not a disease in itself, but is important risk factors of cardiovascular mortality and morbidity. Systolic blood pressure 139, the systolic pressure 89 measure on two or more persistent BP readings. Treatment of extreme lifestyle modification, diet, exercise limit, alcohol and tobacco use, reduce the stress factors. Step 2, if lifestyle changes are not enough, drug therapy will be introduced. If previous steps don't work, the dose or type will be changed or another drug is added. Step 4, more medication are added until BP under control. Classification of anti-hypertensive drugs: diuretics, thiazides, hydrochlorothiazides, furosemide, spironolactone. Furosemide is classics also. ACE inhibitor, captopril, enalapril, namipril, angiotensin, losartan, angiotensin blocker, telmisartan, calcium channel blocker, verapamil, nifedipine, and medipine, etc. Beta-hydrogen metoprolol, ethanol, beta blocker, calcium channel blocker, angiotensin blockers, the important beta alpha adenine blocker, labetalol, carvedilol, ठीक है. Alpha adrenergic blocker, producing phenethylamine and central sympathlytics, vasodilating. Diuretics, drug that increase the rate of urine flow, accompanied by increase the rate of sodium and excretion. Okay. Classification: high efficiency loop diuretics, furosemide, torsemide, medium efficiency thiazides, hydrochlorothiazide, benzene, thiazide like chloromine, etc. Weak efficiency diuretic, carbonic anhydride inhibitor, potassium sparing diuretic. Used with the other antihypertensive enhance the effectiveness. Used mild to moderate STM. Also treat heart failure or kidney disease. Few adverse side effects: hypokalemia, hypercalcemia, impotence, postural hypotension, dehydration, allergic rashes. ACE inhibitors. Mainstay of oral vasodilator therapy, major breakthrough in treatment of STN, more effective when used with diuretic action, peripheral vascular resistance without increasing cardiac output, heart rate, cardiac contractility. Infrequent orthostatic hypotension, lack of aggravation of pulmonary distress, lack of aggravation with DM, increased renal flow, side effects, headache, cough, GIT, stress. Uses STNMI, diabetic neuropathy. Circumstances under which S and IARB should not be used. Inhibit beta blockers. Inhibit the androgenic response mediated through beta receptors.
All beta blockers are competitive antagonists. Beta blockers should be continued through the preoperative period to maintain the desirable drug effect and avoid the sympathetic system hyperactivity due to abrupt discharge. The pharmacology of propanol is described as a prototype. Beta blockers non-selective without intrinsic sympathetic activity with intrinsic sympathetic activity. Traditional alpha blocking property labetalol, propanol, timolol, coronary reaction, CVS, cardiovascular system, how it decreases the heart rate, force of contraction, cardiac output, hence cardiac work and oxygen consumption reduced. Overall effect in angina patient is improvement of oxygen supply and demand status and exercise tolerance increase. CVS blood vessels on prolonged administration BP gradually falls in hypertensive subjects, blocks beta-mediated vasodilation, total peripheral resistance increase, the cardiac output is reduced. With continued treatment of blood vessel gradually adapt to the reduced cardiac output so that peripheral resistance decreases, both systolic and diastolic BP falls. Respiratory syndrome increase the bronchial resistance by blocking beta-2 receptor. In normal individual, sympathetic bronchodilator tone is minimal, hence non-effective seen in, but in asthmatic condition is considerably more and severe attack may be accepted. CNS, no overt central effects, subtle behavioral changes, forgetfulness, increase the dreaming and nightmares have been reported with the long-term high doses. Suppresses anxiety in short term metabolic block the lipolysis. Clinical uses management of angina pectoris, treatment of post-MI patient, prophylaxis, preoperative prevention, hypothyroid patient, suppression of cardiac arrhythmias, migraine, prophylaxis, anxiety, essential tremor, glide. Management of angina pectoris, drug-induced decrease in myocardial oxygenation demand secondary to decreased heart rate, myocardial contractility, reduce the frequency of attacks and increase the exercise flow. Treatment of post-MI patient. Oral treatment with beta blockers after acute MI decreases cardiovascularity, mortality and infarction and increase the chances of survival. 20%. Treatment should be instituted by 5 days to 4 weeks after MI and continue for at least 1 to 3 years. Infusion of beta blocker within 12 hours on onset of MI can decrease the infarct and size of ventricular disarrhythmia. Prophylaxis.
Labetalol, safe and effective treatment of hypertensive emergency. 20-80 mg IV every 10 minutes until desired response is attained. Labetalol 0.1-0.5 kg IV can be used to attenuate increase in heart rate, BP that result from increased surgical stimulation. Can also be used to rebound hypertension after coronary withdrawals and anaphylaxis. Calcium channel blocker. Voltage needed calcium ion channels, cell membranes of skeletal muscle, vascular smooth muscle, cardiac muscles, glandular neuron. Type 2 types: L type, T type, ions type. L type is the main channel of flow send calcium entry into vascular smooth muscles. An L channel has 5 subunits: alpha 1, beta, gamma, delta. Alpha 1 subunit form of central part of channel provides the main pathway of CV entry. Pharmacological effects: decrease the myoglobin contractility, decrease the heart rate, decrease the SA node activity, decrease rate of AVN node conduction, vascular smooth muscle relaxation, dilates coronary arteries and vasospasm. Vasodilator venous relax. Thank you very much. Please subscribe my channel. I will post next videos about medical diseases, medical disorders, which in which actual disease information, sign and symptoms, causes, treatment, management. I will post next video later. So please subscribe my channel. Stay tuned. Thank you very much.